ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है Om आज। Shanti, bienvenue à Aditya Parivar. भगवान वाच Aujourd'hui, c'est le jour 26. सुंदरम ये Dieu पवित्र Shiva dit संपूर्ण Satam पवित्रता Shintam स्वरूप को Sundaram, धारण करो। पवित्रता के महत्व को les signaux जानता aviates, हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा effectuez chaque अपने action en स्वभाव के restant आसन stable पर sur votre रहकर siège, हर dans le कार्य को respect de soi d'être तो une âme शाश्वरता में suprêmement जानता हूँ। pure. Et vous यह recevrez alors सर्वोत्तम facilement आसन la है। bénédiction que इस c'est un आसन niveau पर रहने से facile. पवित्रता Si का vous restez sur स्वभाव ce और स्वयं siège, votre स्थिर état रहता et है, votre ivresse de pureté क्योंकि se स्वमान verront बुद्धि के समान facilement, आ नहीं car सकता। face au respect de soi, अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। aucune conscience du corps ne peut subsister. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. ओम शांति। Om Shanti. हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाबा के साथ Baba qui nous donne la libération et la libération dans la जीवन का vie. मंजिल है, Et nous observons pendant उसका toute la मंजिल कहीं destination, मुक्ति pendant है, toute la journée, la destination que nous devons कहीं atteindre. कहीं दूर है कि पहुंचने ही वाले हैं। Baba nous offre la libération et la पता नहीं libération dans la vie. Sommes-nous encore loin कितना de notre niveau? Selon notre niveau, nous pouvons savoir वाणी को हर combien जब nous avons accompli, que ce soit par nos pensées, पड़ता है ना, par notre esprit, toutes les influences. संस्कारों का भी बहुत बड़ा Donc, il y a aussi les influences de nos sanskars. फिर अपना स्वभाव है, दूसरों Il y को a समझाने beaucoup का de liens avec nos vieux sanskars et notre vieille nature. देखो अगर हम बैठ Et जाएं donc, cela a un कभी impact sur जीवन में तो हमें l'atmosphère. मुक्ति का अनुभव हो रहा है। Si nous disons seulement, OK, व्यवहारिक रूप je में ne fais कैसे qu'expérimenter la libération, mais व्यवहारिक रूप में Baba जो होगा veut वो que dans सच्चाई notre होगी, comportement, tout, वो quel que सच्चाई soit होगी, le niveau, que ce soit vrai, que ce soit réel. तो अनुभव Et लेना जरूरी lorsque है nous nous assoyons, जिससे हम c'est जीवन important में सुख d'expérimenter ले सकें। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज कहें, चुनौती ou कहें, bien pendant toute प्रतियोगिता la कहें, journée, nous pourrions वो prendre है ce योगी bénéfice de व्यवहार और l'expérience. कर्म Pour nous, दोनों c'est में d'être un संतुलन karma रहे। yogi किसी भी et परिस्थिति d'agir में en हमें tant que karma yogi. Et बेशक हम toutes les situations ne संस्कार devraient pas आचरण करें, influencer notre niveau. Nous कर्मों pourrions अनुसार dire, चलें। ah, l'âme ये भी a जरूरी tel है sanskar. Mais selon le dharma, c'est aussi important क्योंकि इससे ही मुझे पता लगेगा parce कि que, मेरा पुरुषार्थ मेरी parce स्थिति que कितनी आगे बढ़ je रही vais है। savoir, je vais connaître quels मैं sont mes efforts, combien je उसके fais बारे में d'efforts, सोचती हूँ quel est mon niveau lorsque तो j'avance. Et सबसे lorsque je me पहली souviens आत्मा de Brahma Baba, बाबा के साथ होती है, alors, हर बार बाबा quelle ने sorte d'âme était जितनी avec अच्छी बात Baba? बताई कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। अगर ये Et समझ il y a une très belle chose qui a été dite, c'est que je suis une âme pure. Si निगरानी je कर रहे suis हैं toujours dans mon respect de soi, que je suis une âme, तो nous pouvons devenir बड़ी celui qui donne des bénédictions. तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, पर मेरे वरदानी होने Si nous devenons les donneurs de bénédictions, दूसरी आत्मा को भी वरदान rien ne देना devrait m'affecter, mais en étant जब moi-même मधुरता un से donneur de प्रचार bénédictions, करते les रहें, autres devraient recevoir दूसरे aussi को ces वरदान हम bénédictions. देते रहें Quelquefois, ce pourrait être la tolérance ou la तो patience. श्रेष्ठ कर्म Continuez de donner des हमारे bénédictions à उसके आधार tous, पर फिर जीवन des में बदलने actions लगते हैं। élevées, des relations élevées, et basées बदलते काटना sur होगा, cela, nous aurons la बदलना libération dans नहीं la होगा। vie. Donc, nous devons vraiment transformer les liens अपरिपूर्णता en को हटाना relations. रहे, पर बनाना उसको C'est très सतयुगी facile संबंध de laisser une relation, जहाँ mais de परिपूर्णता faire que cette की मूर्त relation बन
de faire que cette relation devienne une relation de l'âge d'or, c'est une autre chose. Nous devons atteindre la destination et il y a la louange Baba qui est de Satyam, Shivam, Sundaram. Il a toujours été dit que Dieu est la vérité et l'amour aussi que Dieu a pour nous. C'est un amour vrai, un amour pur. Baba, c'est aussi la connaissance de cette vérité. L'âme bénéficie donc Shivam. Shivam veut dire le bienfaiteur du monde. La vraie connaissance, Satyam veut dire vrai. C'est la vraie connaissance que nous recevons pour devenir sadhik. Cette vérité, c'est tellement beau. Sundaram. Sundaram veut dire de rendre beau. Donc, cette bénédiction devrait être dans notre cœur. Nous devrions l'exprimer à chacun. Pour cela, il doit y avoir un très bon exemple que nous gardons, que je n'ai pas besoin de voir ou d'entendre, je n'ai pas besoin de parler, mais je demeure comme un bienfaiteur du monde. Donc, premièrement, cela va m'apporter du bénéfice. Et aussi, cette chose que nous appelons de bon augure, les bénédictions. Ces bénédictions, les autres aussi vont les recevoir. Je pense beaucoup que je suis une âme pure et le pouvoir de la pureté. Il y a le pouvoir de la pureté et dans le pouvoir de la pureté, il y a le pouvoir de donner des bénédictions. Donc, l'âme va en retirer un bienfait. Il y a tant de revenus que nous pouvons recevoir en faisant des actions élevées. C'est un effort qui est très subtil. Alors, dans notre forme ordinaire, nous pouvons raconter la connaissance, mais d'être une incarnation des bénédictions, c'est autre chose. Donc, l'âme va aussi expérimenter la libération et la libération de la vie. Alors, pendant toute la journée, c'est ce que nous allons penser. Nous allons arrêter sur le fait qu'il y a un bénéfice dans la vérité et seulement dans la vérité. Et c'est une très belle action, je pense, je parle et vraiment, je profite de chaque instant. Et je vais penser demain, je vais penser combien il peut y avoir de bénédictions, mais aussi le pouvoir qui va augmenter dans l'âme. Naturellement, nous allons devenir l'incarnation. Je dois pratiquer, je dois être un bienfaiteur, tout comme mon Père qui est Satyam, Shivam, Sundaram. Alors, je dois prendre ce titre d'être un maître. Om Shanti. Satyam, Shivam, Sundaram. Dieu Shiva a parlé. बच्चों का भी वही नाम है. Tel est le nom du Père, tel est le nom des enfants, c'est-à-dire les bienfaiteurs du monde. का रूप वही बच्चों का Telle est la forme de Baba, telle est la forme des enfants. वह बच्चों के Telles गुण. sont les vertus de Baba, telles sont les vertus des enfants. Telle est la tâche de Baba, telle est la tâche des enfants. Om Shanti.